Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to Business Economics ECO 400 के लेक्चर नंबर 31 में खुश आमदीद। पहले की तरह just for a few minutes I will tell you what we have learned in the previous lecture and then we'll proceed for today's lecture. We discussed about the agriculture sector of Pakistan economy, as we are discussing the Pakistan economies these days. So we discussed the performance or the overview of the agriculture sector in Pakistan economy in the previous lecture. We discussed that different phases of agriculture sectors in Pakistan economy. We have discussed the different issues, problems faced by the agriculture sectors in Pakistan economy. उसके बाद हमने we have also talked about the policies or the government, and इसमें हमने एक commission की बात की. We have talked about the National Commission on Agriculture in Pakistan, and the Agriculture Commission has given policies from time to time for promoting agriculture sectors in Pakistan economy. उसकी हमने बात की. उसके बाद we have talked about the agriculture tax की बात की, and we have discussed the arguments in favor of imposing tax on agriculture sectors and the points in against of not imposing tax on the agriculture tax. We have also talked about the NTRC National Tax Reforms Commission की हमने बात की, जो कि कहते हैं कि there should be an agriculture tax. So this was the brief overview of the previous lecture. So most of the lecture we focused on the agriculture sectors of Pakistan economy. Now today's lecture we will talk about another important aspect of Pakistan economy, which is very important part of Pakistan economy, and here we'll talk about the balance of payment in this particular lecture. What we are going to learn today are we will see the composition of balance of payment, BOP, what is included in balance of payment. Then we'll talk about Pakistan's balance of payment की बात करेंगे. So उसके बाद लास्ट पे हम देखेंगे what are the causes of BOP imbalances, why balance of payment is in imbalance over the time period in Pakistan. तो कुछ causes की हम बात करेंगे. We'll start defining the first part of the lecture, which is about the balance of payment, some theoretical aspects about the balance of payment. It is a comprehensive record of all economic transactions of the residents of a country with the rest of the world during a given time period. So it records all economic transactions of the residents. If we are talking about Pakistan, so the residents of Pakistan who are involved in all economic transactions with the rest of the world, balance during a given time period, which is normally a year. So balance of payment जो है उन all transactions को, economic transactions को, जो कि prevail करती हैं in particular time period में in a year between the residents of Pakistan or of this country with the rest of world. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. तो दिस इज नोन एज द बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट इज ए टेबुलेशन ऑफ द क्रेडिट एंड द डेट transactions of a country with foreign countries and international institutions. So it's a table, and it's tabulation where we record figures of the credit and the debt of transactions of a country with foreign countries and international institutions. So this table जिसमें हमने बात की, we record the credit and debt
transactions of a country with the other countries and international institutions or organizations. So that basically tells us about the balance of payment. Now the Statistics Department of the State Bank of Pakistan is responsible to compose or to compile Pakistan balance of payment statistics, BOP, as per IMF format and BPM5, right? So in case of Pakistan, जो Statistics Department है in the State Bank of Pakistan, that department is responsible to compile the Pakistan's balance of payment situation in the country in the form of table provided by IMF, and which is known as BPM5, right? So we define that balance of payment जो है एक systematic record होता है of all economic transactions का, जो कि prevail करती हैं between the residents of a country with the rest of the world and organizations, institutional, international organizations. तो उसके रिकॉर्ड को जो है हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम देते हैं. एंड हु मेंटेन दिस रिकॉर्ड इन केस ऑफ पाकिस्तान? इन केस ऑफ पाकिस्तान, दिस department, statistics department inside or with the State Bank of Pakistan is responsible to compile all of this data on yearly basis. Now, why is it important? Why balance of payment is important? Why it is important to keep the record of all economic transactions between the two countries? Because it is important because of different reasons. So उन reasons की बात करेंगे कि किन वजूहात की बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये balance of payment जो है is important for an economy or is important for Pakistan economy also. Its main aim is to provide the government information about the international economic position. Basically, the objective of this balance of payment is to provide the information to the government of Pakistan about the international economic position of the country and to help to make decisions about the monetary and fiscal policy of the government on one hand, and about the trade and payments on the other hand. So first, the major aim जो इसका है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो ये है कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन, एंड देन इट हेल्प्स द पाकिस्तान और द गवर्नमेंट to make policies or to make decisions about monetary and fiscal policy on one hand, and also to make decisions about trade and payments on the other hand. तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है what is the economic status of your country internationally, so this is only possible if they look at the balance of payment table given by the State Bank of Pakistan, and on the basis of the information government can make decision about the policies of about the monetary and fiscal policies of the country. And secondly, it also helps the government to make policy regarding trade and payments of the country on the other hand. Government authorities are constant user of balance of payments. So most of the time, most of the countries, in case of Pakistan also, government authorities are the user of the balance of payment record and other statistics in carrying out their responsibilities of monitoring economic activity, formulating recommendations and appropriate balance of payment and domestic economic policies, and evaluating various economic strategies. So जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनके लिए ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पॉलिसी मेकर, टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. दे कैन मॉनिटर इकोनॉमिक प्रोग्रेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, एज वेल एज दे कैन डिज़ाइन और रिकमेंड पॉलिसीज़ फॉर and provide different strategies to the government which can further promote trade and improve the balance of payment of the country.
Regional balance of payment statistics are used both by the Pakistan authorities and by the authorities of the partner countries. जो regional statistics होती है, regional on balance of payment could be used by Pakistan and also could be used by its partner countries to monitor the development in economic relations between Pakistan and those countries or specific country grouping. Right, so regional जो है as the balance of payments text is useful for both Pakistan and other countries in getting information about the economic development, economic activities of the country and the other countries are the partner countries of the world, or you can say are the group of the countries also. So balance of payment basically is an important tool or instrument or information for the government of Pakistan, for the policy maker to design policies and strategies. Monetary policy की बात करें, fiscal policy की बात करें, trade की बात करें, payments की बात करें. So जिस parameter के बारे में government ने policy बनानी है, they have to look at the balance of payment situation of the country and the rest of the countries also. So balance of payment is very important, play a very important role in case of an economy as well as in case of Pakistan की अगर हम बात करते हैं तो. Pakistan balance of payment is used by academicians, also by the researchers, by the businesses, also around the world in monitoring developments in the worldwide payments positions and in comparative studies of trends in balance of payments of various countries. So ये जो balance of payment information है, ये academicians भी use करते हैं, businesses भी use करते हैं, researchers भी use करते हैं. Researchers use these informations of different countries, economic positions of different countries, and they try to draw trends of these balance of payment of different countries and compare the trends or economic situation of different countries and then suggest different policy measures for different countries to promote or to improve their balance of payment of their respective economies. So balance of payment data is also used by international bodies. ये जो data है बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंट कंट्रीज़ का सिर्फ पाकिस्तान यूज़ नहीं करता. दिस डाटा, ये जो डाटा है, ये जो इंफॉर्मेशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ये यूज़ की जाती है बाय डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर एंड एक्सेट्रा. राइट, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिकॉर्ड है, जो टेबल है, जो इंफॉर्मेशन है, जैसा कि हमने देखा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर द कंट्री इटसेल्फ एंड फॉर द अदर कंट्रीज जिसके साथ उसकी ट्रेड हो रही है, जिसके साथ उसके रिलेशंस हैं, सो दैट in order to design different policies for their country, to promote trade, to increase balance of payment, to improve balance of payment situation of the country or of the economy. So इन points, इन reasons की वजूहात की बेस पे हम कह सकते हैं कि balance of payment जो है is very important tool or parameter or indicator for Pakistan economy to design policies, strategies about the country. So we have learned that why balance of payment is important for Pakistan economy or for any country. Now we'll see that what is the composition of balance of payment, what is included in balance of payment table. So first part or the first component of balance of payment is the current account. Current account deals with the trade transaction of goods and services, international services like tourism, transportation, unilateral transfer, gifts and foreign aid. So current account basically is the major part or major component of balance of payment, right? Because it deals with the trade transaction, the goods and services exchanged between the countries, international services in the form of tourism, transportation, unilateral transfers, gifts and foreign aid. So all it is part of the current account.
Now, second component of balance of payment is the capital account. Capital account consists of direct investment and purchasing of assets bearing financial instruments, non-interest bearing demand deposits like gold, and so on. All sort of investment, direct investment, or purchases of interest bearing assets and non-interest bearing assets such as gold are part of capital account. This is the second component of balance of payment. So these are the two main components of balance of payment: current account and capital account. And the third account is the official reserve asset account. This is also a part of balance of payment, and it measures the change in the nation's liquid and non-liquid liabilities to foreign officials holders and the change in the official reserve assets during a year, right? So those liabilities which are with the foreign officials, whether they are liquid or non-liquid, so the change in the nation's liquid and non-liquid liabilities which are due to foreign official holders, and this will bring a change in the foreign reserve assets during a year. So this is also a part of बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो तीन तरह के अकाउंट्स जो है हम इसमें शामिल करते हैं। करंट अकाउंट, जितनी भी ट्रेड और होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, इंटरनेशनल सर्विसेज की जो ट्रेड होती है, लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, बायलैटरल ट्रांसफर्स की बात करते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की बात, लाइक गिफ्ट्स एंड एड की बात करें, दिस इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। Capital account में it's all sort of investment or purchase of assets which are interest bearing assets or non-interest bearing assets are the part of capital account. Now, official reserve asset account that measure the change in the nation's liquid and non-liquid liabilities to the foreign official holders and the change in the official reserves of the country during a particular time period. This is again a part of the balance of payment. पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट की जब हम बात करते हैं, सो विल टॉक अबाउट दिस, इट इज़ अ सिचुएशन। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ सिचुएशन जो विच रिकॉर्ड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज। And if we look at the BOP situation of Pakistan, situation is not encouraging. It has not been satisfactory since independence। आज़ादी से 1947 से बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। इट इज़ नॉट ए गुड सिचुएशन एंड द कंट्री विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 years only has been running a persistent deficit in her balance of payment on current account। तो except only 3 years throughout the history of पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, it remains in balance of payment है on current account, it remains in deficit except only 3 years। And what are those 3 years? These 3 years are as follows: in 1947 and 48, 1951 and 52, and 1972 and 3। So इन 3 सालों के अलावा पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, BOP जो है ऑन करंट अकाउंट, दैट रिमेन्ड इन डेफिसिट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। we need to look at the situation of BOP in Pakistan with the help of figures by different sources. We have been having a trade balance in almost all years except for the 3 years, that is 1947, 1951 and 1972 and 93. In 1947 and 8, exports were 44 millions, imports were 319 millions, and the trade surplus in 47 and 48 was 125 millions. In 1950-51,
trade surplus was 160 million. It was due to the excess exports of cotton and jute. And then in 1972 and 3, trade surplus was 153 million. Reason was massive currency devaluation in 1972. Rupee was appreciated from 4.7 to 11 rupees per dollars, and export share in GDP rose to 14.9%. तो जैसा कि हमने कहा, पाकिस्तान का जो ट्रेड बैलेंस है सिवाय इन 3 सालों के हमेशा डेफिसिट में रहा है, और इन 3 साल वो कौन से साल हैं? 1947, 48, 51, 52 एंड 72, 73, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। जैसे कि हमने देखी, इन 3 सालों में पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, विच इज़ करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट BOP, is in surplus, and the other years, in all other years, the trade balance of Pakistan remains in deficit throughout the history of Pakistan. We'll continue to look at the situation of BOP in Pakistan in this slide also. 82-83 की बात करते हैं. After witnessing its significant improvement in 1982-83, the BOP deteriorated sharply in 83 and 84, and this trend continued in 1984 and 85. तो थोड़ा सा कुछ असाफा बेहतरी आई थी BOP में 82-83 में, लेकिन उसके बाद 83, 84, 84, 85 में there is a decline in the balance of payment. Lower growth was, and that was due to the lower growth in merchandise exports and the decline in home remittances, and these two become the reasons of decline in balance of payment, right? So because of the low growth in merchandise export and low remittances in that particular time period, इन factors की वजह से जो BOP है उसमें significant जो है decline आई from 82 to 84 and 5. If we talk about the situation in 1987 and 88, Pakistan balance of payment position, which had deteriorated sharply in 1987-88, withdrawn down to $460 billion on the foreign exchange reserve, received a terms of trade shock in 1988 and 89. तो एक बड़ा ट्रेड शॉक मिला पाकिस्तान को because of the decline in foreign exchange reserve. 462 million dollars की जो foreign exchange में कमी आई, that gave a big shock to Pakistan economy, or to the great shock to the trade of Pakistan economy. If we talk about the year 89 and 90, the BOP has shown improved performance as compared to the previous 2 years during year 1980 and during 89 and 90, with the reduction in current account deficit. There was a deficit in current account, exports कम थी, imports ज़्यादा थी, but the deficit was comparatively low as compared to the previous years, and there was increase in net international reserve. तो थोड़ी सी सूरत हाल जो है 89 और 90 में बेहतर हुई, डेफिसिट में कमी वाक़ई हुई और नेट इंटरनेशनल रिजर्व में इजाफा हुआ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट 97 and 88, जबकि काफ़ी हद तक जो है इजाफा हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट में, और बैलेंस और इंटरनेशनल रिजर्व में खासी हद तक कमी वाक़ई हुई. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट 89 और 90 की बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी वाक़ई हुई और नेट इंटरनेशनल रिजर्व में इजाफा हुआ. We'll continue to explain the situation of BOP in Pakistan over the different time periods. Merchandise and service account has been showing poor performance over the years since 1972 and 73. Merchandise exports में और account में काफ़ी हद तक बुरी performance रही since 72 and 73.
combined deficit over the years are, like if we talk about in 1972 and 3, the overall deficit in this account was 12.8 billion rupees. 75-76 में जो deficit था, that was 25.84 billion. If we talk about 1978-79, the deficit was rupees 30.05 billion. And if we talk about 1979 and 80, the deficit in the merchandise and service account was 31.62 billion. So in this time period that start 1972 to 79 and 80, there was a decline in the this account or it remains in it gives a very poor performance in Pakistan economy. Economy was temporarily depending on external factors in these years, that is the foreign remittances and foreign aid in 1981. So in these specific particular years, the economy of Pakistan was depending on the remittances which they received and on foreign aid during 80 and 81. We'll continue with the situation of BOP in Pakistan. BOP further deteriorated sharply in 1983 to 85 because of the lower growth in merchandise exports. Trade deficit increased in 89 due to floods in Punjab and Sindh and disturbance in Karachi. Right, 89 में further trades में deficits में कमी वाक़या हुई, and that decline in trade was due to the decrease in trade deficit was due to the floods, heavy floods in Sindh and Punjab, and the bad situation in Karachi at that time. Government implemented SAP program, social action program, to remove imbalances in BOP. Government have tried to reduce the balance of payment deficit by adopting social action program. Key elements were flexible exchange rates and trade and tariff reforms and viable fiscal balance. So these were the key elements which were focused by the government of Pakistan to reduce balance of payment balance of payment deficit with the help of social action program. Because of all these measures taken by the government in the form of SAP, trade deficit declined from $1.93 billion to $1.7 billion in 89 and 90. तो एक साल में इन measures की वजह से, social action program की वजह से, which government has adopted to recover or to improve the balance of payment, and the trade deficit declined from $1.93 billion in 1988-89 to $1.7 billion in 89-90. Worker remittances were showing some declining and rising trend from 82 to 83 to 2003 and 4. So in 10 सालों की अगर इन 20 सालों की बात करें तो इन कुछ सालों में वर्कर रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, कुछ में कमी वाक़या हुई, and again that contributed towards the balance of payment deficit or improvement in the balance of payment deficit over the time period from 1982 to 2003 and 4. Now, what is the current situation of balance of payment position? What is the current situation of BOP in Pakistan? Pakistan is still suffering BOP deficit or the problem in the balance of payment, and that problem is mainly because of the exchange earning capacity depends on primary goods which are cheaper, which has low price in the international market, and because of that it fetch a very low or less foreign exchange from the international market, and because of that the market in Pakistan is unstable. Now
If we talk about the current situation of BOP in Pakistan, still struggling to cover up, to recover the balance of payment position, and still it is in deficit. And the major reason is the primary goods are exported, and which are cheaper in the international market and fetch or attract lesser foreign exchange, and for which market is unstable in Pakistan. Development programs require import of equipment, which also cause a trade deficit. So you know the growth, as far as growth is accelerating, development is taking place in Pakistan. जब growth होती है, development होती है, that requires, ज़रूरत पड़ती है import of equipment की, technology की, machinery की, ये दूसरे ममालिक से import करनी पड़ती है for the growth of Pakistan, for the development of Pakistan economy. तो जब import होती है machinery की, heavy equipment की, उसकी वजह से भी and the trade जो है वो deficit में चली जाती है. It also contribute toward the deficit of trade in Pakistan economy. So this is the current state of affair of BOP in Pakistan. Just to give you an idea, if you look in this table tells us the trade and payments growth in terms of percentage, that is the average, and also the annual. So in the first column we have exports on FOB, freight on board prices, imports, then we have trade deficit, we have worker remittances, and we have the current account deficit of Pakistan economy. And then we are taking the figures of different years. 1980s की बात करें, 10 सालों की figures हैं, then we have 1990s, 2000s, and then we have 1999 and 2006, and then we have 2009 and 10. If you look at the growth rate of trade and payments over the year, in 1980s, the growth rate of export was 8.5%. In 1980s, it come down to 5.6. In 1990s, it further goes up in 2009 to 9.9%. Further goes down in 1999. 2006, it further goes down from 9.9 to 4.5%. It further goes down to 2.9% in 2009 and 10. So you see that almost it's a very fluctuating trend in the case of export of Pakistan are concerned, and in most of the years the trend is downward. Exports are going down. There is downward trend in the growth rate of exports over the time period in Pakistan. Now if we look at on the other side, if we look at the imports of Pakistan, imports in the year 1980 is 4.5, then 3.2, then it rose to 13.7% in 2000. Then it goes to negative in 1999, and it further goes up from negative to 8% straight forward, and then in minus in 1.7. So after looking at the export and imports, we can come to the trade deficit. It was trade was in surplus in 1980s, then in negative, in deficit in 1990, 2000 में positive था, and then in negative it's 32% in negative in 1999, positive in 2006 and 7, then it goes to negative again in 2009 and 10. Worker remittances received in 1.9%. The growth rate in worker remittances in 90s is 1.9%. It went to negative. The growth rate in remittance went to negative in 90s. That is minus 5.3%. Again in positive, and 26 growth in remittances was in 26.8% in 2000. Again went to negative in 99, minus 7.7. Then into if we talk about in 2006 and 7, it's again the growth rate of remittances is positive, 19.4, and then 14 in 2010.
Current account was in deficit in 1980s, and it was 21.2% the growth rate in deficit, and the growth rate in 90 was 22. It went to negative in 2006 and negative in 2009. So this tells you the overall picture of the growth rate in trade and payments over the year, which is annual. If you look at this table, again it is the trade and payments growth rate, average annual percentage of GDP at market prices. MP is the market prices. So if you look at in 1980, if you look at the exports first, so export, there is fluctuations in the growth rate of exports over the years. Sometimes it is increasing, sometimes it's coming and down and going up. So it's the fluctuating trend over the time period. Imports, there is increase in imports in most of the years. Trade deficit में जो है, it's again a fluctuating trend. Sometimes trade deficit is coming down, going up, coming down again, and then there is current account deficit. Again it's fluctuating, sometimes it's going up, coming down. So this tells us a different picture of the BOP, the trade and payments of the growth rate of Pakistan economy. Now we'll look at the causes or the problems of balance of payment. Why balance of payment is in deficit always? Why balance of payment remains in balance over the years in Pakistan economy? There are different factors, different causes of imbalance of payment. So we'll look at one by one. First, the first reason, the first cause of imbalance in BOP in Pakistan is slow growth of production. There is slow growth of production, the scope of increasing the exports of fruit. There was a scope of increasing the export of fruit, vegetables and livestock products to the Middle East. But the potential for increasing the production of these items was not properly realized. There was a strong there was a positive, strong better scope of increasing the exports of fruit, vegetable and livestock to the Middle East, but that was not cashed. Usko cash nahi kiya. That scope was not realized. We have not focused on the production of these products like fruits, vegetables and livestock, and we have not realized that scope, and because of that this could be one of the factor of imbalance in BOP. Number two, other factor could be marketable portion of agricultural products was very small part of the total production. The marketable portion of agricultural products is very low. Most of the agricultural products are consumed or used domestically. Very small portion as in terms of quality, in terms of quantity is left for exports for international market. Most of the part of agricultural product or agricultural production is low quality, or it's is utilized, is used for the domestic consumption. A very small quantity and good quality product is left for the international market. This could be another reason or factor or cause of imbalance in BOP. Underutilization of existing capacity is there, so we are not utilizing all our resources potentially up to the maximum capacity. Resources are underutilized or underutilized in the country. So if resources are underutilized, are remaining idle in the country, of course this could become a cause of BOP imbalance, because if resources are underutilized, low exports, more imports in the country, there will be deficit in current account, and then of course it creates imbalance in balance of payment. Another factor which is one of the important factor of the
imbalance in BOP in Pakistan is the political uncertainty. The event started with the dissolution of assembly in the 80s. It greatly affected psychology of businesses, communities in Pakistan, right? So political uncertainty is very, very important factor in imbalancing the balance of payment. इसकी uncertainty की वजह से जो business community है उनकी in Pakistan, whether they are domestic investor or Pakistani investor or foreign investor in Pakistan, उनका जो confidence है वो इतना build नहीं होता. They are shaky, they are demotivated, they are less confident to invest in Pakistan to produce goods and services and improve the balance of payment. So political uncertainty, instability is another important cause of imbalance in balance of payment in Pakistan. Fiscal policies, heavy import duties on raw material are also so high that high cost of production makes the goods uncompetitive in the market, the world market. So when we impose heavy duties on the raw material which is used in the production of goods and services domestically, because of those heavy duties it increases the cost of production. जब cost of production बढ़ती है naturally prices जो है उन चीज़ों की बढ़ जाती हैं. It became expensive in the international market, right? जब महंगी हो जाती हैं तो it lose competition in the world market, right? So they become uncompetitive in the world market. So there is less demand of those goods and services in the world market. तो जिसकी वजह से हमारा जो balance of payment जो है imbalance हो जाता है. These import duties work like export duties. Approach of tax rebate was adopted on the production of export, but this procedure was very time consuming and complex, so it greatly reduced the impact of tax rebate. कोशिश की गई tax rebate का जो अडॉप्ट की गई on production of export, गवर्नमेंट ने ये कहा कि if you produce those goods in the economy which are used for export, so you will be given rebate on taxes, right? So but the procedure the government introduced was very time consuming and complex, so it greatly reduced the impact of tax rebate. तो जिससे उन producers को खास फायदा नहीं हुआ उस tax rebate का, and this could be possible one of the cause of imbalance in BOP. The approach should be to tax consumption, not production. So government को चाहिए था they should tax consumption instead of taxing production. Trade restrictions of developed countries, बहुत सारे ममालिक जो developed countries हैं उनकी कुछ they have different trade restrictions. It has a huge impact on Pakistan's exports of cotton and textile. So the restriction imposed by the developed countries or by the developed nations on Pakistani exports of cotton, that is textiles, and cotton exports, other products of cotton, जिसकी वजह से भी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उस सेक्टर में कमी वाक़ हुई, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, and this was the possible cause of imbalance in Pakistan over the number of years in Pakistan economy. We'll continue with explaining the causes of imbalance in BOP. Another important cause of imbalance in BOP is the import substitution policy of Pakistan. It is causing higher domestic prices, inefficient industries, because in absence of foreign competition, there is no incentive for reducing the production cost. What is import substitution policy of Pakistan? Government has adopted this policy. Instead of importing goods from the international market, they have provided incentive to produce those goods domestically. Now what happened?
domestic industries were not efficient, they were inefficient to produce those goods and services. उनकी prices बढ़ गई. जब prices बढ़ गई because of the foreign competition, लोग वहाँ पे कोई competition नहीं था. They are the only producer of the product and which reduce which has not given any incentive to the producer to reduce cost in the economy. तो गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी कि इंस्टेड ऑफ के बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाएं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इंसेंटिव दिया जाए कि वो प्रोड्यूस करें, उसकी वजह से भी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई. अब प्राइसेस क्यों बढ़ी? बिकॉज के कोई फॉरेन कंपटीशन नहीं था मार्केट में और उससे कोई कॉस्ट में खासी कमी वाक़या नहीं हुई, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमारा इम्बैलेंस हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस रहा मुख्तलिफ सालों में. पाकिस्तान की हिस्ट्री की अगर बात करें तो दिस कुड बी अनदर फैक्टर of imbalance in BOP. Heavy import of food grains and energy. Because of the heavy imports of food grains and energy related products from international market, this created a deficit in the balance current account deficit and in current account, and which in turn create imbalance in balance of payment in Pakistan economy. Inflation is another probable cost or cause of imbalance in BOP. Inflation is the general rise in the prices of products in the country. जब prices बढ़ रही होती हैं तो products or exports become expensive for the international, for the importers or for the developed countries. जब export आपकी महंगी हो जाती हैं तो overall उनकी demand कम होती है, demand कम होती है तो imports बढ़ जाती हैं और balance of payment जो है इम्बैलेंस हो जाता है, डेफिसिट में चला जाता है. प्राइसिंग पॉलिसी जो है adopted by the government, again it has not played a significant role to improve the balance of payment situation in Pakistan economy. It remains fluctuating over the time period. If you look at the history of Pakistan from 1947 to 2010 and 11 की बात अगर आप करें तो pricing policy जो है government की, that remains quite unstable over the time period, and this is probable cause of imbalance in BOP. Foreign exchange remittances भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रहे हैं, काफ़ी हद तक फ्लक्चुएशन रही है इसमें, इसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इम्बैलेंस रहा है. नाउ व्हाट आर द पॉलिसी ऑप्शंस विद द गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस the balance of payment deficit or improve the balance of payment position in Pakistan. There are a lot of फैक्टर्स जिसको देखने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और उनके बारे में पॉलिसीज बनानी चाहिए सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो सिचुएशन है बेहतर हो सकती है. विल सी दैट व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल विद द गवर्नमेंट to improve the balance of payment situation in Pakistan economy. One of the option is that they try to make export more elastic. If you remember the concept of elastic, when we make our exports more elastic, a smaller change in price will bring a bigger change in quantity demand of our export products, right? So if exported product, अगर हम थोड़ी सी भी prices में कमी करेंगे, उसकी जो demand है our exported products की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, right? So when exports की demand बहुत ज़्यादा बढ़ेगी because of the elastic export product, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा. किस तरह बेहतर हो जाएगा? जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो आपका जो करंट अकाउंट जो है उसका करंट अकाउंट जो है दैट वुड बी इम्प्रूव और उसमें बेहतरी आ जाएगी, एंड दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन द कंट्री और ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. reduce inflation. So if government try to adopt policies, either monetary policy or fiscal policy, to reduce inflation in the economy, and by reducing inflation in the economy,
we can improve the balance of payment situation in the country. Reduction in import of luxury item. अगर हम इंपोर्ट्स जो लग्जरी आइटम हैं उनकी इंपोर्ट्स कम कर देते हैं और दूसरी साइड से आप एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो जो डेफिसिट है ट्रेड बैलेंस में वो कम हो जाएगा. जब ट्रेड में डेफिसिट कम होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इम्प्रूव होगा. तो लग्जरीज आइटम्स को इंपोर्ट को कम करना चाहिए. किस तरह कम कर सकते हैं? बाय इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस, quotas or tariff or duties on the import of luxury goods from different countries. अगर हम इन पे टैक्सेस लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं तो उनकी इंपोर्ट्स में कमी वाक़ई हो जाएगी. ओवरऑल जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव कर जाएगा. ट्रेड बैलेंस जब इम्प्रूव करेगा तो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा. Another possible option with the government is to import of raw material available in the country should be disallowed, right? Most of the raw material is imported from different countries, which is used for the production of different goods and services in the economy. So गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में, कि ऐसा रॉ मटेरियल जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर कॉटन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं, स्टील प्रोडक्ट्स के लिए कर सकते हैं. We can, and so on, and so many other products. So for those products for which raw material is domestically available, उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, उसको डिस्करेज करना चाहिए ताकि इंपोर्ट्स में कमी वाक़ई आए और बैलेंस ऑफ ट्रेड की सिचुएशन बेहतर हो. और बैलेंस ऑफ ट्रेड जब बेहतर होगा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव कर जाएगा. Another factor could be high quality exportable goods should be produced at competitive cost. We should produce those goods or those exportable goods which are of high quality, which can compete in the international market at a reasonable cost, at a competitive cost, so that exports may be increased or should be increased. And balance of trade could be improved. Balance of trade could be deficit could be improved and trade could be moved towards surplus. और जब ये होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर हो जाएगा, राइट. सो हाई क्वालिटी जो है, हमें जो एक्सपोर्टेबल गुड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर करना चाहिए. जब क्वालिटी बेहतर करेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकती हैं. जब compete करेंगी, कंपटीशन होगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव कर जाएगा. रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो हमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे कमी करनी चाहिए. फिजिकल पॉलिसी जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ पे हम एक्सपोर्ट पे लगाते हैं, ड्यूटीज़ लगाते हैं, उनको कम करना चाहिए. और जब ड्यूटीज़ कम करेंगे ऑन एक्सपोर्ट्स, सो दिस विल अलाउ मोर एक्सपोर्ट्स from the country and provide incentive to the producer to produce those goods which are which can be exported to other country. तो इस तरह से एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है और ट्रेड बैलेंस को बेहतर किया जा सकता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री की इम्प्रूव कर जाएगी, बेहतर हो जाएगी. Another option available with the government is the established joint ventures with friendly countries to encourage production. हमें जॉइंट वेंचर्स एस्टेब्लिश करने चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने चाहिए दूसरे ममालिक के साथ, ताकि हम जॉइंटली चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकें एट ए चीपर कॉस्ट, एट ए लो कॉस्ट. सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव कर जाएगा, राइट. सो establish joint ventures with friendly countries to encourage production in the country, to increase production capability of the country. Other policy options available with the government is that floating exchange rate can also correct the balance of payment disequilibrium. Instead of adopting fixed exchange rate, we have
an option, we can link up the exchange rate with the international markets. We should adopt floating exchange rate, right? So when we floating exchange rate, तो इससे भी आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, उसमें बेहतरी आ सकती है, और it can improve the balance of payment disequilibrium in the country. Fully utilize idle capacity. जैसे कि हमने पहले बात की कि जब हम इसके प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसमें एक हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया अंडर यूटिलाइजेशन का, कि इन केस ऑफ पाकिस्तान resources are underutilized, they are not utilized up to its full capacity. तो हम अगर if we utilize all of our resources at its full capacity, तो हम क्या कर सकते हैं, we can produce more, we can produce more exportable products, imports को कम कर सकते हैं, and this will help to increase the exports of the country and reduce imports of the country and improve the balance of payment situation in the economy or in the country. Another possible option available with the government to improve the balance of payment situation in the country is it can do it by encouraging exports of manufacturing goods, particularly engineering goods. If the government adopts policies which increase the production of manufacturing goods or encourage the export of manufacturing goods, particularly those goods which are engineering goods, तो इससे क्या होगा, the country can earn more foreign exchange because these goods have more value, more higher prices in the international market, right? So आपका जब फॉरेन एक्सचेंज बेहतर होगा, जब तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर कर जाएगा. तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए which encourage more export of manufacturing goods, particularly engineering goods. Another option with the government is that export oriented industries should be exempted from sales and excise tax. Those industries which are producing export goods, they should be exempted from sales and other excise taxes, right? If they are exempted from those taxes, what will happen, क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, they will produce more export oriented goods and goods, right? जब एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी कि नेचुरली उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी. सो व्हाट विल हैपन, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो बेहतर हो जाएगा. जब ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा तो व्हाट विल हैपन, द ओवरऑल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस कंट्री का वो बेहतर हो जाएगा. सो these are some of the options available with the government of Pakistan, जिनको वो अडॉप्ट करके कोशिश कर सकते हैं कि वो कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर लें. आज I will just revise or summarize those options which are available to the government, जिनको सोचना चाहिए ताकि आपको ये याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए. जैसे कि हमने कहा, one of the option with the government is that they should make their export elastic. इलास्टिक जब होंगी तो क्या होगा, थोड़ी सी भी चेंज प्राइसेस में आएगी, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब एक्सपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो आपका ट्रेड बैलेंस बेहतर होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है उसकी जो सिचुएशन है बेहतर हो जाएगी. इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं, एक जो ऑप्शन जैसे कि हमने डिस्कस की, इन्फ्लेशन इज अनदर ऑप्शन, जिसको कम करके कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है. Another option with the government is that they can reduce imports of luxury item, जो कि हमने डिस्कस किया. लग्जरी आइटम की इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, टैरिफ लगा दिया जाए, ड्यूटीज़ लगा दी जाए, तो उनकी इंपोर्ट कम हो जाएगी. जब इंपोर्ट्स कम होगी, क्योंकि इन पे मैक्सिमम द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज ऑन द इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम, तो इससे क्या होगा, कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगी.
एक और ऑप्शन जो हमने डिस्कस की, हमने ये डिस्कस किया कि कंट्री में जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, उस रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उस पर हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, ड्यूटीज इम्पोज करने चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके और उसकी कास्ट कम हो। कास्ट जब कम होगी तो उसकी प्राइस जो है, कास्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी और कम्पिटिटिव होगी इंटरनेशनल मार्केट में, और अर्निंग्स बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा। इन्हांस प्रोडक्शन कर सकते हैं। एक और मेजर जो हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट शुड enhance the production capacity or capabilities of producer, local producer। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी और आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हमने ये देखा कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट्स। जब एक्सपोर्ट पर ड्यूटीज़ कम करेंगे, प्रोवाइड इंसेंटिव टू दी एक्सपोर्टर्स and then they increase production of export, more exports और imports कम होंगी और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन की बात की हमने ये कहा कि जॉइंट वेंचर जो है, गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश जॉइंट वेंचर विद द फ्रेंडली कंट्रीज टू एनकरेज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो जॉइंट वेंचर की वजह से जब हमारे दो ममालिक के दरमियान, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जॉइंट वेंचर्स होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स जो है ईजिली हो सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकती है। प्रोडक्शन बढ़ेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव कर जाएगा। उसके बाद हमने ऑप्शन की बात की, द कंट्री कैन अडॉप्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड बाय अडॉप्टिंग फ्लोटिंग एक्सचेंज इट कैन करेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। एंड अदर फैक्टर्स जिसकी हमने बात की, हमने ये कहा कि इन केस ऑफ पाकिस्तान रिसोर्सेज आर अंडर यूटिलाइज्ड। अगर जैसे कि यू सी पाकिस्तान हैज़ अबंडेंस availability of natural resources, minerals available हैं, water available है, there are a lot of other resources। Pakistan is a agricultural economy। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि we are not focusing on our agriculture sectors। the government को कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करानी चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर किया जाए ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर जो एक्सपोर्ट्स की जाती हैं दैट बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएं। जब इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, पॉलिसी बेहतर करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन बेहतर होगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और आपकी जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो बेहतर हो जाएगा। एंड इट कैन हेल्प टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट इनटू इक्विलिब्रियम, राइट। सो जो रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, वेदर दे आर नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर की फॉर्म में बात करें तो उनको हमें फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को। और जो हमने एक फैक्टर की बात की, ऑप्शन की बात की, गवर्नमेंट शुड इनकरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। इसकी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स, सो दे कैन अर्न मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर कर सकें। एक और जो लास्ट हमने पॉलिसी ऑप्शन की बात की, वी डिस्कस दैट गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस एंड एक्साइज ड्यूटीज और सेल्स और एक्साइज टैक्सेस ऑन दी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज। दे शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्राम सेल्स एंड एक्साइज ड्यूटीज। जब ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एग्जेम्प्टेड होंगे सेल्स से, टैक्स से और एक्साइज ड्यूटी से, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी और बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट कंट्री का improve करिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास, आज हमने क्या सीखा, हमने पाकिस्तान इकानमी के बारे में एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पाकिस्तान इकानमी का, विच इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट की हमने बात की। हमने देखा कि व्हाट इज़ द बैलेंस पेमेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान ओवर द टाइम पीरियड सिंस इट्स इंडिपेंडेंस हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह के मसाइल का सामना है पाकिस्तान इकानमी का
किस तरह के इश्यूज हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। हम कहते हैं, हमने ये कहा शुरू में, हमने ये कहा कि एक्सेप्ट ओनली 3 years जो पाकिस्तान इकानमी, पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा डिसइक्विलिब्रियम में रहा है, इम्बैलेंस रहा है। वाई? बिकॉज उसके बाद हमने देखा कि देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से, इश्यूज हैं जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्बैलेंस रहा है, डिसइक्विलिब्रियम रहा है। एंड लास्टली जो हमने देखा इन द लास्ट, एट द एंड हमने ये देखा देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस और पॉलिसीज और रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट उन ऑप्शंस पे गौर करे और उन ऑप्शंस को अडॉप्ट करे और उनके बारे में पॉलिसीज़ बनाए, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करे, इंपोर्ट्स को डिस्करेज करे, जो आइडल रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जाए, तो गवर्नमेंट का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको बेहतर किया जा सकता है और कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड देन वी कैन ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ओवरऑल हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की आज के लेक्चर में, and the important sources of information for this particular lecture. You can again take help from the book which we have discussed. आप उस बुक से इसको देख सकते हैं। इशरत हुसैन की बुक है। इसके बाद ज़ैदी एस अकबर की एक किताब है जो कि इश्यूज इन पाकिस्तान इकानमी के बारे में, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। एंड देन यू कैन लुक एट दी बुक सईद के अमजद 2007 में इसने किताब लिखी इकानमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो दैट कैन आल्सो बी ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडेज लेक्चर। एंड आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द इकोनॉमिक सर्वेज ऑफ पाकिस्तान। उसमें स्पेशली अगर लेटेस्ट इश्यूज आप देख लेंगे, दिस इज़ पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उनका जो फाइनेंस विंग है, इकोनॉमिक एडवाइजर विंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, दे पब्लिश एवरी ईयर बिफोर द बजट दिस इकोनॉमिक सर्वे। उसको अगर आप देख लेंगे तो यू कैन गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस ऑफ पाकिस्तान इकानमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ पाकिस्तान इकानमी को आप की इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। So dear students, this was all about today's lecture. We'll end up with today's lecture here. Next time आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर के लिए। Till the time, God bless you and Allah Hafiz.